जहां तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश में। दैनिक जागरण से All right, let's quickly go across to Pallavi Ghosh to put this into perspective for us. Pallavi, of course, a very confident sounding Rahul Gandhi and Akhilesh Yadav over there. But is this specifically only limited to their alliance in Uttar Pradesh? Does the confidence really sort of cover the entire nation? Well, I mean, the first phase is very critical. Largest number of seats, Western UP is a very critical factor, both for the alliance as well as for the BJP, which perhaps explains why he decided to do the press conference in Ghaziabad. And as Akhilesh Yadav said, from Ghaziabad to Ghazipur, we are confident that the India alliance is going to sweep. Well, I mean, going with the track record, the last time the UP ke ladke came together during the state elections, it did not leave any kind of a magic. But this time, Rahul Gandhi is already giving out a long list of reasons why he thinks the alliance will work. That a development which the BJP is talking about is merely a smoke screen. What the Congress and the India Front's calculation is that at least in UP, the Yadav vote and the minority vote will not be scattered. It will be limited to the BJP, to the Congress plus the Samajwadi Party. So that is one reason why they are hopeful that the minority vote doesn't get divided in case the SP and the Congress are fighting separately. As far as issues of unemployment and the electoral bonds are concerned, the Congress and Samajwadi Party have in fact been raking it time and again, but has it sort of really benefited them? In fact, I'm also joined in by Shahzad Poonawala of the Bharatiya Janata Party on the phone line at the moment. Shahzad, Rahul Gandhi, of course, calling the BJP fake. Youth currently still remains unemployed. Electoral bonds, in fact, he's saying is a go down of all the scams. No, nobody takes Rahul Gandhi or his utterances seriously. A person who does not know what MRP means, a person who makes despicable comments on Aishwarya Rai, and a person whose own family has a history of 12 lakh crores of corruption, who's sitting with Lalu Prasad Yadav on one side and Arvind Kejriwal on the other side, has hardly got any moral locus to comment on others. But having said that, I have a couple of questions. Today, when a question which is in the public domain was asked by the media about whether Rahul Gandhi will show the courage and conviction to contest from Amethi, he labeled the media as BJP media. Should the media be taking this lying down? In the sense that Indira Gandhi stifles the media, Rajiv Gandhi tries to stifle media rights, and now Rahul Gandhi continues to attack the media. And how is this a BJP question? Wasn't it the left parties that posed this question first when they fielded Annie Raja? I feel disappointed on two counts. One, that he thinks that the left party is equal to BJP. So then why is he in alliance with them? And secondly, that the DNA of Indira Gandhi of stifling the media seems to have transmutated into a more virulent form in Rahul Gandhi, where he thinks that questions that are asked of him are all BJP-sponsored questions, or that he is above questioning. The fact of the matter is that if Rahul Gandhi has the conviction, he must answer that the almost 7,000 to 8,000 crores of electoral bond money that he and his ilk have got with 242 seats, is that all good chanda? And what BJP gets with 303 seats is bad chanda? Is the chanda that was given to Congress party, to DMK, to TMC from the lottery king, all of that is Satvik chanda, and the remaining chanda given to the BJP is all dhanda? So this kind of hypocrisy at its peak is one thing. But why doesn't Rahul Gandhi answer questions posed to him by the media rather than castigating the media for every time they ask a legitimate question in the public domain? All right. In fact, Shahzad, I'm going to request you to continue staying with us. We are also joined in by Fakhrul Chand of the Samajwadi Party. Fakhrul Chand, आपने सुना अभी शहजाद का क्या कहना है? वो साफ साफ यही क्वेश्चन पोज कर रहे हैं कि जो मतलब मीडिया के क्वेश्चंस होते हैं उनको डक कर दिया जाता है, मीडिया को अटैक कर दिया जाता है कि हम बीजेपी के बिहेव पे एक्ट कर रहे हैं। पर आपने सुना शहजाद क्या कह रहे हैं, अभी आप कुछ कहना चाहेंगे उनके रिबटल में? देखिए, शहजाद जी को क्यों दिक्कत हो रही है अगर मीडिया पे सवाल उठाए? भाजपा पे जो सवाल उठे हैं उसका जवाब शहजाद जी को देना चाहिए था ना। वो क्यों जब भी सवाल मीडिया पे होते हैं, चुनाव आयोग पे होते हैं, भारतीय जनता पार्टी आगे आ जाती है। ईवीएम पे सवाल होते हैं, जवाब उसका चुनाव आयोग को देना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सामने आ जाती है। अरे भाई, आपसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं, बताइए कि पेपर लीक उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहे हैं? आपसे अगर सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने नारा दिया था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 10 साल की सरकार में तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था।
पर फखरुल आप तो चंद, ये बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि राहुल गांधी अभी तक अमेठी को लेकर जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। आज जबकि लास्ट डे है कैंपेनिंग का, फेज 1 ऑफ पोलिंग के पहले, उस दिन भी ये जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो ये कमजोरी का निशान है कि नहीं? नहीं, कोई कमजोरी नहीं है। हर पार्टी की, हर गठबंधन का अपना तरीका है चुनाव प्रचार का, और हम कैसे चुनाव लड़ेंगे, कब हम टिकट डिक्लेयर करेंगे, किस समय करेंगे, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। हम भी सवाल पूछ सकते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को क्या आप जो है झारखंड पे जब पोलिंग हो जाएगी तब टिकट देने के लिए इंतजार कर रहे हैं ना? आप इंतजार कर रहे हैं ना लोगों, पूरे देश को धोखा देने के लिए कि अभी झारखंड का चुनाव खत्म हो जाए फिर धीरे से आप टिकट दे देंगे। आप बताइए ना, भाजपा क्यों पर क्या ब्रजभूषण को सच में राहुल गांधी से कंपेयर करना चाहेंगे? नहीं, वो बहुत बड़ी भूल होगी आपकी खुद की। इनफैक्ट आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। देखिए, नहीं, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फखरुल चंद जी। इनफैक्ट एंड विद दैट लेट्स स्लिप इनटू अ क्विक ब्रेक। विल बी बैक विद द लेटेस्ट ब्रेकिंग इनपुट। स्टे ट्यून्ड टू CNN News 18।